نشهد عنه السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अब ट्रांसलेशन करेंगे साथ साथ ट्रांसलेशन आप करेंगे साथ. ये अल्लाह ताला का फजल है. Ini adalah kurnia dari Allah Ta'ala. It is the blessing of Allah the Almighty that He has enabled me once again to meet the Ahmadis of this area. Datang lagi bertemu dengan para Ahmadi di daerah sini atau wilayah ini. मलेशिया और इंडोनेशिया के हालात जमाती लिहाज से ऐसे हैं. From the perspective of the Jamaat, the circumstances in Indonesia and Malaysia are such that it is difficult for me to visit those countries. Demikian rupa sehingga saya sulit untuk ke sana. इसलिए सिंगापुर ही ऐसी जगह है जहां इन जमातों के अफराद से मुलाकात. Singapore is such a country where Allah the Almighty provides the means for me to meet the members of the Jamaat. Kepada saya untuk berjumpa dengan warga jemaat. अल्लाह ताला जल्द ऐसे हालात पैदा फरमाए May Allah the Almighty rapidly enable such circumstances where favorable conditions are brought about in those countries for Ahmadis also, and it becomes possible for the Khalifa of the time to visit. Keadaan sedemikian rupa sehingga keadaan di sana berubah dan saya mendapatkan taufik untuk berjumpa dengan warga jemaat di sana. इस दफा इंडोनेशिया और मलेशिया से This time, over 3,000 Ahmadis have come from Indonesia and Malaysia. Indonesia dan Malaysia yang Ahmadi yang datang lebih dari 3.000 orang. ज्यादातर इंडोनेशिया के अहमदियों की है. The majority of those who have come are of Indonesian Ahmadis. इसके अलावा In addition, Ahmadis have come from Thailand, Burma, Myanmar, Philippines, and so on. Myanmar, Vietnam, Filipina dan lain-lain. और बाज गैर जमात भी तशरीफ लाए हैं. There are some non-Ahmadis who have also come here to attend. बहरहाल ये अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने मुलाकात. Nonetheless, it is a favor of Allah the Almighty that He has brought about the means of meeting the members of the Jamaat. Sarana untuk kita bisa berjumpa. इस खित्ते में इंडोनेशिया ऐसा मुल्क है जहां In this region, Indonesia is such a country where as a result of Ahmadiyyat, the members of the Jamaat are being severely persecuted. Adalah di mana memperoleh perlakuan yang sedemikian rupa. और बाज शहादतें भी हुई हैं Di mana ada juga yang There have been some martyrdoms also. और हुकूमती एहलकारों की मौजूदगी में सब कुछ हुआ है. And all of this happened right in front of the government workers and officials. और हो रहा है, ये नहीं कि बंद हो गया. And all of this continues to occur. It is not the case that this only happened once and then it stopped. तकरीबन 7 साल पहले मैं यहाँ पहली दफा आया था. Approximately 7 years ago, I visited here for the first time. kali. तो उस वक्त भी कुछ अर्सा पहले A short while before I came, then, जुल्मों का एक सिलसिला a wave of persecution had begun in Indonesia. Beberapa saat sebelumnya warga jemaat Indonesia juga mendapatkan perlakuan keaniayaan.
मसाजिद पर हमले हुए, The mosques were attacked. There was destruction and disorder, and property of the Jamaat was damaged. Dan kemudian harta kekayaan juga ada yang dihancurkan. अहमदियों पर हमले हुए, जानी और माली नुकसान हुआ। Ahmadis were attacked, and there was loss of life and property. Mendapatkan kerugian baik jiwa dan harta kekayaan. बहरहाल उसके बाद तो दुश्मनी का ही सिलसिला। Nonetheless, after this, the enmity of the detractors and opponents accelerated rapidly. जानी और माली नुकसान होता रहा। There was continuous loss of life and property. Terus berlangsung. और अब सब जानते हैं कि किस तरह जालिमाना And all of you are aware of how cruelly and barbarically, under the supervision of the police, Ahmadis were martyred. Penganiayaan di hadapan polisi, orang-orang Ahmadiyah disyahidkan. ऐसा जुल्म था कि इंसाफ पसंद There was so much cruelty there that even the just local press condemned this act. Surat-surat kabar media lokal juga mengecam perlakuan tersebut. आजकल मीडिया की वजह से दुनिया इतनी करीब हो चुकी है Nowadays, as a result of the media, the world has drawn so close together Dunia telah menyatu melalui media. कि फौरी तौर that the cruelty that was perpetrated was immediately relayed to the corners of the world. Langsung menyebar ke seluruh dunia. That is to say, the reports and details of what came to pass was relayed to every person of the world. Dilihat oleh semua orang seluruh dunia. और दुनिया की नजर भी इस तरफ मबजूल हुई And the attention of the world turned towards this issue. और इसके लिए आवाजें भी उठाई गईं And for this, voices were also raised. Dikumandangkan untuk itu. बहरहाल वो सब इदारे या लोग जिन्होंने Nonetheless, all those organizations or people who raised a voice against the oppressors who perpetrated the cruelties against the Jamaat, we thank them also. Yang mendukung jemaat ketika mendapatkan keaniayaan, untuk semua mereka itu saya menyampaikan ucapan terima kasih. लेकिन हर जुल्म जो जमात पर किया जाता है However, every act of injustice and wrongdoing that is perpetrated upon the Jamaat, Allah the Almighty, in other respects, also brings about a positive outcome. Permusuhan atau keaniayaan itu di satu sisi Allah Ta'ala memberikan hasil yang jauh lebih baik. इंडोनेशिया के अहमदियों पर इस जुल्म की वजह से जमात का As a result of this cruelty upon the Indonesian Ahmadis, the Jamaat was introduced in the world on a very large scale. Sehingga jemaat terus berkembang di seluruh dunia. अफ्रीका के एक दूर दराज इलाके में In a far-off and remote area of Africa, when this video was shown of these three Ahmadis being martyred, a senior scholar there, when he saw this video, decided that such cruelty and injustice could only happen to a mu'min, to a believer. So thus he said that today I accept Ahmadiyyat, the true Islam. Di Afrika, maka ada seorang imam besar di Afrika, ulama besar di Afrika. Ketika dia mendengar itu, dia mengatakan bahwa penganiayaan seperti ini hanya dapat dialami oleh orang mukmin. Oleh karena itu saya hari ini akan masuk Ahmadiyah. इस जुल्म की वजह से As a result of this persecution and cruelty, bai'ats or initiations did not only occur in Indonesia, but in fact in many other places of the world. Bahkan seluruh dunia terjadi juga banyak pembeatan. पाकिस्तान के बाद After Pakistan, Indonesia is such a country where stories of cruelty and barbarity are continuously being written. Tempat di mana sejarah atau riwayat keaniayaan terus berlangsung. जहां अहमदियों Where atrocities are occurring upon Ahmadis most barbarically. Secara dengan cara seperti kehewanan diperlakukan seperti hewan dianiaya. इंडोनेशिया में तो अब कुछ हद तक कमी वाक़या हो रही है Now in Indonesia, this has lessened to some extent. However, this persecution and cruelty is continuous and constant in Pakistan. Hal ini terus menerus berlangsung.
और ये जुल्म खुदा These atrocities and this injustice is being done on the name of Allah and His Messenger. Bukan atas nama Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. उस खुदा के नाम पर ये जुल्म हो रहे हैं It is being done upon the name of that God whose teachings are replete with Haqukul Abad, discharging the rights of mankind. Allah itu Tuhan yang memperlakukan manusia dengan penuh kerahiman dan rahmatnya. उस खुदा के नाम पर जुल्म हो रहे हैं जो मुसलमानों को रहम These wrongdoings are being done on the name of that God who has given teachings of mercy, compassion and justice. Perlakuan cinta kasih dan kasih sayang kepada sesama manusia. उस रसूल के नाम पर ये जुल्म हो रहे हैं जो It is being done in the name of that messenger who is a rahmatul lil alameen, the mercy for all of mankind. उस रसूल के नाम पर जुल्म These cruelties are being perpetrated on the name of that messenger who has actually forbid cruelty from being perpetrated even during times of war. Padahal beliau pada waktu perang mengajarkan bagaimana untuk berbuat untuk menghindari keaniayaan. जिसने कलमा पढ़ने वाले को कत्ल कर Who expressed great anger upon the companion who had killed the other person who had just recited the Muslim creed, the kalima. Orang yang mengucapkan kalimat syahadat, beliau sangat marah terhadap sahabat tersebut. और जब सहाबी ने जवाब दिया And when the companion replied that that disbeliever had only recited the Muslim creed, the kalima, out of the fear of being under the sword, Hanya karena takut kepada pedang, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Did you peel open his heart to see this in him?" membelah dadanya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. That whether he had recited the kalima, the Muslim creed, out of fear or truly from his heart. Dengan sepenuh hati membaca kalimat syahadat. बहरहाल पाकिस्तान में तो जुल्मों की इंतहा है Nonetheless, there is the heights of persecution being committed in Pakistan. Persecution is taking place against those who recite the kalima on the name of the kalima. Dan mereka lakukan atas nama kalimat syahadat. और उन्हीं का असर और उन पाकिस्तानी मुल्लाओं का असर And those Pakistani mullahs have an influence upon the mullahs of Indonesia who have committed these cruelties or who are inciting people to act in these wrong ways. Indonesia juga melakukan keaniayaan. जब भी मौका मिलता है मुखालफी नुकसान पहुंचा Whenever they get the opportunity, the opponents make an effort to cause harm and suffering. Melakukan keaniayaan. लेकिन ये भी अल्लाह ताला का एहसान है However, it is also a favor of Allah the Almighty that as the opponents are increasing in their enmity, the steadfastness within Ahmadis is increasing even more so. Sebagaimana keaniayaan berlangsung, maka keimanan orang-orang Ahmadiyah terus menjadi kuat. हमारे मुखालफीन नहीं जानते कि Our opponents are not aware that Ahmadiyyat is that true Islam whose roots have been firmly entrenched in our hearts. Bahwa Ahmadiyah adalah hakiki Islam yang hakiki, yang kebenarannya telah ditanamkan sangat kuat di dalam hati kita. और कोई मुखालफत और कोई तेज आंधी And no opposition, and neither can any fierce storm remove these firm roots from our faith. Dapat mencabut kekuatan iman kita itu dari akarnya, dari kedalamannya. अहमदी खुदा ताला के How can Ahmadis turn away from Allah the Almighty after observing the manifestation of His blessings? Tidak mungkin seorang Ahmadi yang ketika melihat perlakuan Allah Ta'ala sedemikian rupa akan bisa mundur dari keimanannya itu. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम After forming a connection with the ardent devotee of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, how can an Ahmadi break this bond? Memutuskan hubungan dengan seorang yang sangat mencintai hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. वो बंधन जिसने अल्लाह ताला That bond which has further strengthened the bond with Allah and His Messenger. Yaitu suatu ikatan yang telah memperkuat ikatan kita dengan Allah Ta'ala dan dengan hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. जिसने ईमान में तरक्की के वो रास्ते Which has shown those paths of increasing in faith which non-Ahmadis are unaware of. Alaihi salam telah memperlihatkan pada kita jalan untuk kemajuan keimanan yang jalan itu belum dilihat oleh orang-orang gair Ahmadi.
बस हर अहमदी को चाहिए कि इन मुखालफत Thus, it is the duty of every single Ahmadi that despite the storms of opposition, he should continuously increase his faith. Ketika menyaksikan keaniayaan seperti ini, terus menerus perkuat keimanan masing-masing. इस्तिकामत के इन He should always remain resolute upon these examples of steadfastness. ईमान और इखलास में बढ़ता चला जाए, He should go on increasing in his faith and in his sincerity and devotion. कदम के लिए दुआ भी करें. And he should also supplicate and pray in order to be remaining steadfast. For steadfastness is also granted purely and only through the blessings and grace of Allah. और अल्लाह ताला के फजलों को हासिल करने के लिए उसके And in order to attain the blessings of Allah the Almighty, it is of extreme importance to submit before Him and to fulfill the right of His worship. Dan tunduk sujud di hadapannya merupakan hal yang sangat penting. इसी तरह अपनी अमली हालतों को पहले से बेहतर करने की तरफ In this same way, give great heed to improving your practical state to a greater degree than before. Dari sebelumnya. अल्लाह ताला के आगे झुकना और अपनी अमली हालतों को बेहतर To करना submit before Allah the Almighty and to improve your practical state is not only the duty of those Ahmadis who are being persecuted. Dan terus menerus tunduk sujud di hadapan Allah Ta'ala bukan hanya kewajiban orang-orang Ahmadi yang mendapatkan keaniayaan. बल्कि हर अहमदी को अपनी हालतों के जायजे In लेने fact, every single Ahmadi should take a self-analysis and self-assessment. सिंगापुर के अहमदी भी और बर्मा के The Ahmadis of Indonesia, the Ahmadis of Burma, the Ahmadis of Thailand, and the Ahmadis of every country in the world, if they do not take a self-assessment of their faith, they will not increase in their faith. Seluruh dunia tidak memperhatikan dan menengok ke dalam keadaan masing-masing, maka masing-masing tidak akan memperoleh kemajuan. और अगर अहमदियत में तरक्की नहीं And if they do not progress within Ahmadiyat, then there is no point of being an Ahmadi. Mendapat kemajuan melalui kalian, maka kalian menjadi Ahmadi tidak ada faedahnya. बस हर अहमदी को अपने ईमान So thus, it is a duty of every single Ahmadi to give heed towards increasing and strengthening their faith and conviction. Keyakinannya. मैंने मलेशिया का भी जिक्र किया था. वहाँ I had mentioned Malaysia, where opposition also exists. Terjadi permusuhan. वक्तन फवक्तन वहाँ भी उबाल उठता रहता है. From time to time, there also there is furor. Terjadi juga kekerasan ataupun kekerasan terhadap jemaat. However, there are not the same circumstances there as in Indonesia. Seperti keadaan di Indonesia. मुसलमान तंजीमों ने जगह I have heard that the organizations there have placed signboards in various places. बोर्ड लगाए हुए साइन बोर्ड लगाए हुए Ya, dipasang berbagai macam spanduk yang menentang jemaat. जिन पर लिखा हुआ है कादियानी मुसलमान नहीं है. Upon these signboards is written that Qadianis are not Muslim and other similar words. Bukanlah Islam, atau bukan orang Muslim. जो यकीनन जब एक अहम Most certainly, when any Ahmadi passes by these signs and sees them, his sentiments are hurt and wounded. Tentu terluka. जगह जगह ये तारीखें लिखी हुई एक अहमदियों के These words are written at different places and most certainly injures the feelings and sentiments of an Ahmadi. अहमदी कानून को हाथ में ना ले However, an Ahmadi, as a result of not taking the law in his own hands, always shows patience. Mengambil hukum ke tangannya, maka selalu memperlihatkan kesabaran ketika melihat yang demikian. खुदा ताला जानता है कि हम अहमदी मुसलमान हैं. Allah the Almighty is aware that we are Ahmadi Muslims. हम जानते हैं कि हम इन दूसरों से ज्यादा We know that we are better Muslims than others. Lakukan keislaman kita lebih daripada yang lain. हम जानते हैं कि हमारे दिल अल्लाह ताला We are aware that our hearts are filled with the love of Allah and His Messenger. Lebih dari yang lain, sangat mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that one who says La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, the Muslim creed, should not be called a kafir, a disbeliever. Sebagai kafir. क्योंकि ये काफिर कहना तुम पर Because to call one a kafir will actually rebound upon you. Katakan kafir kepada
orang seperti itu akan berbalik kepada yang mengatakan. बल्कि फरमाया कि जो सिर्फ ला इलाहा In इल्लल्लाह fact, the कहता है, Prophet वो said, मुसलमान है। one who just says La ilaha illallah Muhammad Rasulullah is also a Muslim. Illallah saja sudah muslim. बल्कि कुरान शरीफ तो कहता है कि जो तुम्हें सलाम कहता And the है, Holy Quran says, one who says salam, ये ना कहो कि तुम मोमिन नहीं हो। do not say that you are not a believer. You are not a Mu'min. Kepada kamu, orang yang menyalam itu tidak boleh kamu katakan bukan muslim, bukan muslim. बस कुरान करीम की तालीम तो ये है। Thus, this is the teaching of the Holy Quran. और इन लोगों ने अपना एक अलग इस्लाम बना लिया हुआ है। And these people have concocted an Islam of their own. Ajaran Islam dengan cara yang lain. अल्लाह ताला के अहकामात से अहकामात को भी उन्होंने अपने Even from the commands of Allah the Almighty, for their personal gains and desires, they have made this into a joke before the non-Muslims. Gunakan demi kepentingan masing-masing, kepentingan pribadi masing-masing, sehingga dijadikan sebagai olok-olokan. मलेशिया के सदर जमात में मिले थे, कह रहे थे कि बोर्ड तो The Sadr Jamaat of Malaysia met me and said the signboards are still placed in different places. However, people no longer care about them. Nasional Jemaat Ahmadiyah Malaysia mengatakan bahwa memang ada papan yang tertulis seperti itu, tapi orang-orang tidak memperhatikan. गैर जमात शुरफा And sincere non-Ahmadis have also discovered that it is the personal gains and desires of the Muslim clerics which they are expressing and demonstrating. Itu mereka tempelkan demi untuk kepentingan pribadi mereka. इस्लाम को In this way, they are making Islam in the sight of the non-Muslims a means of mockery and ridicule. Olok-olokan bagi di hadapan orang-orang bukan Islam. इस्लाम को पुरानी तालीम के खिलाफ या अपनी मर्जी के मुताबिक ढालना चाहते हैं। They desire to implement the Holy Quran's teachings in accordance with their own desires. Keinginan mereka. लेकिन हकीकी इस्लाम वही है However, true Islam is that which is in accordance with the commands of Allah and His Messenger. Mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. अब कुछ अर्सा पहले मलेशिया में एक ईसाई Now, some time ago in Malaysia, a Christian priest said that even if Christians utilize the word Allah, there would be no harm because He is also our Allah. Katakan bahwa kata Allah juga mereka gunakan, karena itu juga mereka memiliki hak untuk menggunakan kata tersebut. इस पर उन नाम नेहाद उलमा ने शोर डाल दिया। Upon this, the so-called Muslim clerics raised a hue and cry that how did he dare to say this? Pernyataannya itu mengatakan bahwa apa yang menyebabkan dia menjadi berani untuk mengemukakan pendapatnya seperti itu. अदालत में मुकदमा ले A जाया case was taken to the Mereka courts, mengajukan pendeta tersebut ke pengadilan. और फिर ये अदालत का ये हाल है and this is the state of the court, that they gave the decision that only Muslims could use the name Allah. Pengadilan sedemikian rupa sehingga memberikan keputusan bahwa kata Allah hanya boleh digunakan oleh orang Islam. और कोई किसी को हक नहीं कि ये कहे And they said that no one had the right to say that Allah also belonged to me. Kata Allah untuk mereka. गोया इन दुनिया As such, these worldly people, in the name of Allah, have also restricted Allah's name. Katanya orang-orang yang berpemahaman duniawi seperti itu, mereka memberangus atau menyempitkan tempat Allah Subhanahu wa taala. ये समझते हैं कि अल्लाह ताला पर सिर्फ They assume that only the so-called Muslims have the monopoly upon the name of Allah. Orang-orang yang menyatakan muslim seperti itu. जाहिल मौलवी तो ऐसे If बातें करें ignorant Maulvis make such statements, they can do so. The astonishment is upon those well-educated decision-makers who are defaming Islam by acting in this way. Menulis yang demikian silakanlah menulis. Tetapi kita sangat sedih melihat ada orang-orang yang berpendidikan juga mempunyai pemahaman yang seperti itu. अल्लाह ताला तो फरमाता है Allah the Almighty says, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All praise belongs to Allah, Lord of all the worlds. Allah is the Lord of everyone, चाहे मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है। whether he is a Muslim or a non-Muslim. फिर अल्लाह ताला फरमाता है Then Allah the Almighty states, Allahu yabsutu rizqa liman yasha, that Allah enlarges His provision for whomsoever He pleases. Yang dia kehendaki.
क्या ईसाइयों Is someone else giving provisions to Jews, to Hindus, to Christians, or to anyone else? Memberikan rezeki kepada orang-orang Kristen, Yahudi dan lain-lain. Apakah ada wujud lain yang memberikan rezeki kepada mereka? इनके इस फैसले की रूह से According to the spirit of this decision that they have made, if a Christian says that Allah gives me provisions, then this would be an unforgivable crime. Seperti itu, kalau ada orang Kristen yang mengatakan bahwa yang memberikan rezeki kepada saya adalah Allah Ta'ala, maka ulama itu menganggap bahwa orang Kristen itu telah melakukan pelanggaran yang sangat luar biasa. Allah the Almighty in the Holy Quran has, through the previous prophets even, told them to say, Allah Rabbakum wa Rabba Abaikumul Awwalin. Allah juga berfirman bahwa kata Allah itu digunakan juga oleh अल्लाह जो तुम्हारा रब है Allah, your Lord and the Lord of your forefathers of old. kamu dan juga Rab pendahulu-pendahulu ataupun leluhur-leluhur kamu. बस अल्लाह ताला पर मुसलमानों Thus, how can Muslims claim a monopoly or sole ownership over Allah? की हो गई अल्लाह ताला पर मुसलमानों की इजारादारी कहाँ से हो गई How can Muslims claim a monopoly or sole ownership over Allah? Suatu keputusan ataupun dari Allah Taala untuk hanya menggunakan kata seperti itu. फिर अहले किताब को अल्लाह ताला फरमाता है Then Allah the Almighty says to the people of the book with regards to those Christians who the Malaysian court have decided that the name of Allah can only be used by Muslims. So Allah says to the people of the book in the Holy Quran, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ. That say, O people of the book, come to a word equal between us and you, that we worship none but Allah. Keputusannya telah diberikan oleh pengadilan Malaysia misalnya, Allah Taala berfirman bahwa wahai ahli kitab, sembahlah kepada Allah, Rabb, kepada Tuhan, Rabb, Tuhan kamu dan Tuhan kami dan Tuhan kamu, yaitu Allah. That is to say, the common value is the being of Allah the Almighty. That is, between the Muslims and the Christians, the common factor or value is the being of Allah. Just as Muslims have the right to say Allah, in the same way Christians also have the right to say Allah. And similarly, anybody at all has the right to say Allah. Thus, I have given these examples because various Ahmadis ask questions about this matter. The Holy Quran is filled with such examples, where Allah the Almighty has called Himself the Lord of everyone. No person, no sect, no religion, and no government or court can claim monopoly or sole ownership over the name Allah. Allah the Almighty is no trademark. He is the Rabbul Alameen, the Lord of all the worlds. Today, it is Ahmadis alone who can inform the world of the true teachings of Islam and of the nature and status of Allah the Supreme, and what the reality of the teachings of the Holy Quran are. As I have stated, non-Ahmadi Muslims have made Islam a point of mockery and ridicule for the non-Muslims. Nonetheless, it is the duty of the Malaysian Ahmadis that they should go on informing their fellow citizens of the true teachings of Islam with wisdom.
kawan-kawan mereka bahwa Islam yang sebenarnya adalah bagaimana. उनको बताएं कि तुम Tell them that why, by following these so-called Muslim clerics, are you defaming the beautiful teachings of Islam? Dapat menyatakan pada mereka, bagaimana kalian bisa mengikuti orang-orang yang menyatakan diri ulama tetapi akan merusak nama Islam. अल्लाह ताला इनकी जहालत के पर्दों को दूर फरमा May Allah the Almighty eliminate the blindfolds of ignorance. Dan Allah Ta'ala menyingkapkan tutup dari kejahilan mereka ini. मैंने एशिया और मलेशिया का जिक्र किया है I have mentioned Malaysia and Indonesia. सिंगापुर के अहमदी सोचते हों Perhaps the Ahmadis of Singapore will think that he has come to our country, yet he is mentioning other countries. Saya datang ke sini, tetapi yang disebut-sebut adalah negara-negara yang lain. तो पहली बात तो ये कि हर अहमदी So the first point is that every single Ahmadi should remember that Momins or believers are like one body. Orang Ahmadi bahwa orang-orang mukmin adalah sebagai satu badan. एक को तकलीफ पहुंचती है तो दूसरे को When one is inflicted with pain and suffering, then the other also feels the pain and suffering. Yang lain pun juga mendapatkan pertobelian seperti ini. इसलिए उन मुल्कों में रहने वाले So thus, the Ahmadis in those countries where they are being inflicted with pain and suffering, their pain and suffering should be felt by every single Ahmadi all over the world. Mendapatkan keaniayaan dan kesulitan, maka orang-orang Ahmadi dimanapun seluruh dunia harus merasakan kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang Ahmadi yang demikian. दूसरे सिंगापुर के अहमदियों से भी मैं कहता हूं Similarly, I should say to the Ahmadis of Singapore that the circumstances here are good. Bahwa keadaan kalian di sini baik. हुकूमत किसी मजहब के खिलाफ बोलने की The government does not allow anyone to speak out against any other religion. Untuk melakukan penentangan terhadap hal-hal keagamaan. लेकिन अपने मजहब की खूबियां बयान However, at the same time, it does not stop anyone from presenting the good qualities and characteristics of their religion. Pada ajaran yang kita miliki. बस हिकमत के साथ अपनी तबलीग के मैदान Thus, with wisdom, go on increasing and widening the field of your preaching. हर तबके में अहमदियत यानी हकीकी इस्लाम का पैगाम पहुंचाएं Sampaikan Convey the message of Ahmadiyyat, that is the true Islam, to every segment of the society. यहाँ मेरे सामने जो अहमदी बैठे हुए हैं चाहे The Ahmadis who are sitting here before me, whether they are of Singapore or of any other country, baik dari Singapura atau dari manapun, हमें याद रखना चाहिए कि चाहे हालात they should all remember that whether the circumstances are favorable or adverse, we Ahmadi Muslims must present the true image of Islam before the world. ingat bahwa kita orang-orang Ahmadi harus memperlihatkan Islam yang indah kepada dunia. इस्लाम और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपके सीरत के खूबसूरत पहलुओं को दुनिया पर जाहिर करना है Dan tugas kita We must demonstrate and manifest before the world the true image of Islam and the beautiful aspects of the life of the Holy Prophet Muhammad. May the peace and blessings of Allah be upon him. किसी पहलू को भी ले लें Take any aspect of the life of the Holy Prophet Muhammad. May the peace and blessings of Allah be upon him. अल्लाह ताला फरमाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Allah the Almighty says that every aspect of the life of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a uswa-e hasana, a blessed model for a true Muslim. uswatun hasanah. चाहे वो घरेलू मामलात हैं या मुआशी Whether it relates to domestic affairs, whether it relates to social affairs in dealings with others, Ataupun masalah di masyarakat atau publik. या गैर कौमों के साथ और whether it relates to dealings with foreign countries or other nations. Kita atau dengan orang-orang asing. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए Whichever aspect it was, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a perfect model for us. गैरों के सामने सीरत बयान करनी Therefore, when we have to present the life of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam before others, we would also have to follow and implement it ourselves. Dunia, maka kita pun harus mempelajari dan menerapkannya. अपने अमली नमूनों से इस्लाम की तरफ गैरों को Through our practical examples, we will have to attract others towards Islam. Kita masing-masing.
जब रहमतुल लिल आलमीन का हकीकी चेहरा दुनिया को दिखाना है, When we have to present the true image of the mercy of all mankind before the entire world, pada dunia, तो खुद भी then we ourselves would have to display at every level the examples of love, brotherhood, and compassion. setiap level kita mengenai hubungan persaudaraan dan cinta kasih dan persahabatan persaudaraan. कुरान करीम की हकीकी तालीम If we are to demonstrate the true teachings of the Holy Quran before the world, Ajaran Al-Quran Karim yang hakiki pada dunia, दुनिया को बताना है कि कुरान we would have to inform the world that in order to understand the teachings of the Holy Quran, in this era, Allah the Almighty has sent His chosen one, and the ardent devotee of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Without bonding with him, one cannot understand the true purport and meaning of this teaching. mengirim wujud pilihannya yang sangat mencintai hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mengikatkan hubungan dengan beliau, maka untuk memahami ajaran Islam yang hakiki akan sangat sulit dan tidak mungkin. अगर ज़माने के इमाम के साथ नहीं जुड़ोगे, If you do not connect with the Imam of the time, then all you will do is continue to raise edicts of being heretics and disbelievers against one another. Fatwakan kekafiran. इसके बगैर गैर मज़हब को इस्लाम के करीब लाने के बजाय Without bonding with him, instead of bringing non-Muslims towards Islam, you will continue to distance them from Islam. Maka bukannya kita akan bisa menarik orang-orang ke dalam Islam, bahkan akan menjadikan orang-orang bukan Islam makin jauh dari Islam. बस हर अहमदी का काम है कि खुदा ताला So thus it is the duty of every single Ahmadi that they should be grateful for the favors that Allah the Almighty has bestowed. कि उसने हमें हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों के मुताबिक That in accordance with the prophecies of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he has enabled us to accept the promised Messiah and Imam Mahdi who came. Janji hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima Imam zaman yaitu hadrat Masih Maud dan Imam Mahdi alaihi salam. लेकिन ये शुक्रगुजारी किस तरह होगी? Tapi bagaimana However, cara how bersyukur? will this gratitude and thankfulness be made? के लिए हमें अपनी ख्वाहिशात In order for this gratitude to be made, we would have to channel our personal desires in accordance with the true teachings of Islam. Ajaran Islam di dalam amalan-amalan kita dengan cara yang sebenar-benarnya. अपने जज्बात की कुर्बानी देनी होगी। We would have to sacrifice our sentiments. हकीकी तालीम को समझने के लिए मेहनत करनी होगी। In order to understand these true teachings, we would have to endeavor and strive. बस इस तरफ हमें बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। So thus, there is a need for us to give great heed in this direction. बातें तो बहुत सी करने वाली हैं, लेकिन ये वक्त नहीं। There are many things to be said, but there is insufficient time to adequately relate all of these. Izin kepada saya untuk menjelaskan segala sesuatu. लेकिन ये अल्लाह ताला का एहसान है However, it is a favor of Allah the Almighty that in this era, despite the long distances, Allah the Almighty, through the means of MTA, has bonded the link between Khilafat and the Jamaat together. Walaupun hubungan jarak yang sangat jauh, akan tetapi melalui MTA Allah Ta'ala telah mempersatukan kita. इसलिए This is why, most certainly, listen to my sermons and my various other programs. Dengarkanlah terus-menerus khutbah-khutbah saya dan ujangan-ujangan saya. मैंने जायजा लिया है बाज़ ओहदेदारान I have assessed this. There are even some office holders who do not listen to the sermons regularly. Saya bahwa ada sebagian pengurus pun kurang memperhatikan khutbah. ये खुतबात वक्त I try to deliver these sermons in accordance with the need of the time. Supaya sesuai dengan keperluan masa atau waktu. इसलिए अपने आप को इनसे जरूर जोड़ें Oleh For karena this itu, reason, most certainly menyatukan form a link kita in connection with them. mengikatkan diri dengan khutbah-khutbah yang saya sampaikan. ताकि दुनिया में हर जगह अहमदियत की तालीम This is so that the world can come to know of the identity of the teachings of Ahmadiyyat. Supaya seluruh dunia dapat mengetahui mengenai ajaran-ajaran jemaat yang yaitu jemaat yang bersatu di seluruh dunia.
आखिर में मैं हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के इरशादात आपके At the end, I shall present some of the statements of the promised Messiah on whom be peace, from which it can be discerned what standard the promised Messiah alayhi salam desired his Jamaat to be at. Akan dapat diketahui bagaimana harapan hadrat Masih Maud terhadap kita. आप फरमाते हैं कि जरूरी The promised Messiah on whom be peace states, "It is necessary that when this pledge is made that I will give precedence to my faith over all worldly matters, that one constantly studies this pledge." Mendahulukan kepentingan agama di atas kepentingan dunia. Hal ini harus terus-menerus diperhatikan dan direnungkan. और इसके मुताबिक अपनी अमली जिंदगी का उम्दा नमूना पेश And present the excellent example in your practical lives of this. Kita harus berupaya untuk menerapkan atau menyesuaikan amalan kita dengan ajaran itu. फिर आपने फरमाया कि खुदा Then the promised Messiah alayhi salam states, "The help of Allah the Almighty is with those people only Allah akan bersama orang-orang yang जो हमेशा नेकी में आगे ही आगे कदम रखते हैं who always advance and march forward in virtues and performing pieties. They never remain rooted in one place. और वही हैं जिनका अंजाम बखैर होता है It is the ending of such people which is a good ending." akhir yang sangat baik. फिर फरमाया अल्लाह ताला Then the promised Messiah alayhi salam states, "In the Holy Quran, Allah the Almighty has taught thee prayer. Beliau Aslihi fi zurriyati." Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala berfirman bahwa itu mengajarkan doa wa aslih li fi That also reform and make better my wife and my children. Ya Allah, perbaikilah istri-istri ataupun pasangan-pasanganku dengan anak-anakku. अपनी हालत की पाक तब्दीली और दुआओं के साथ साथ Alongside bringing about pious reformation in your inner self, and alongside prayers and supplication. Dalam diri masing-masing dan disertai dengan doa-doa. अपनी औलाद और बीवी के वास्ते भी दुआ करते Also, constantly pray for the sake of your wife and children. Doalah untuk diri sendiri dan istri atau pasangan-pasangan dan anak-anak. क्योंकि अक्सर फितने औलाद की वजह Because often many trials come upon a person as a result of his children. Menghadapi fitnah ataupun kesulitan karena anak keturunan. और अक्सर बीवी की वजह से Dan juga And often trials come as a result of one's wife. हैं कि चाहिए कि Then the promised Messiah alayhi salam states, "Your actions should testify to you being an Ahmadi." amalan kalian hendaknya menjadi saksi tentang keahmadiaan kalian. फरमाया कि हमारी जमात The promised Messiah alayhi salam states, "Our Jamaat, our community should remember this point emphatically, Harus mengingat hal ini. कि अल्लाह ताला को किसी हालत में that in any circumstance or situation, Allah the Almighty should never be forgotten. बुलाया जावे In any circumstance or situation, Allah the Almighty should never be हर forgotten. वक्त उसी से मदद मांगते रहना चाहिए Setiap waktu harus Always go on asking for His help and support. इंसान कुछ चीज नहीं है Without this, man is nothing. orang tidak mempunyai arti apa-apa. बस हम में से हर एक को अपने जायजे Thus, every single one of us needs to take a self-assessment and self-analyzation. किस हद तक हम में पाक तब्दीली That to what extent have we brought about pious reformations within? Dalam kebaikan untuk mensucikan diri. किस हद तक हम अपने बच्चों को भी To what degree are we making attempts to form a connection and link between our children and the Jamaat? किस हद तक हम कुरान करीम की तालीम पर अमल To कर what रहे हैं extent are we acting and implementing upon the teachings of the Holy Quran? ऐसा अमल कि गैर भी हमें Such actions that even others look at us and say that they are better Muslims than us. Sedemikian rupa sehingga orang-orang yang bukan Ahmadi pun ketika melihat bahwa ternyata orang-orang ini adalah lebih baik keislamannya dibanding kami. क्या हमारे नमूने ऐसे हैं कि इस्लाम Have we established such examples through which opponents of Islam, observing us, become inclined towards us? Mengatakan bahwa memuji mengenai ajaran Islam. अगर हम ये मयार हासिल कर रहे हैं Kalau kita If we are achieving this standard, तो इंशाअल्लाह ताला ये बातें जहां then inshallah ta'ala, God willing, where on the one hand these aspects will bring us near to Allah the Almighty, Allah Subhanahu wa taala. वहां हमें तादाद there on the other hand, it will also become a means of increasing our numbers.
Further, one day the opposition against the Jamaat will vanish in the air. May Allah the Almighty grant you and I increase in faith and conviction. And at every moment, may Allah the Almighty keep you in His safety. And may all the schemes of the opponents be reduced to dust. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر